हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। और आज हम लोग इंडियन सोसाइटी का टॉपिक सेक्युलरिज्म जो है ये डिस्कस करेंगे। तो इसमें विल डिस्कस फर्स्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, देन द मॉडल्स ऑफ सेक्युलरिज्म लाइक यूएस मॉडल, फ्रांस मॉडल एंड इंडिया मॉडल। सेक्युलराइजेशन क्या होता है एंड व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी इश्यूज रिलेटेड टू लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड, डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सबरीमाला इशू, ट्रिपल तलाक, संथारा प्रैक्टिसेस एट्सेट्रा। तो सबसे पहले सेक्युलरिज्म की डिफिनीशन वाइज इट रिफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड पीपल who have the mandate to represent the government from religious institutions and dignitaries. It is devoid of both inter and inter-religious dominations. It promotes the freedom of equality both within and between the religions, and it includes the separation of state from the religion, and uh, however, the nature and extent of the separation depends upon the values it intend to promote. डिफरेंट मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म अगर देखें तो यूएस का जो मॉडल है इट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट सेकुलरिज्म। तो इसमें कॉन्सेप्ट गिवन बाई थॉमस जेफरसन है ये, जो कि यूएस प्रेसिडेंट थे। एंड दिस मॉडल सेड दैट द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम द स्फीयर ऑफ रिलीजन, and state shall not accept any religion as state religion, and no one shall be discriminated on the grounds of religion and religious practices. तो जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस ही एंड शी इज़ प्रैक्टिसिंग उस पे बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। और जो ये जो यूएस का जो मॉडल है इट इज़ ऑफ आर्म फॉलोज द आर्म लेंथ डिस्टेंस एंड इट इज़ वेयर द पॉलिटिक्स एंड रिलीजन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू ईच अदर। इसके साथ यूएस सेकुलरिज्म इज बेस्ड अपॉन द रेशनल दैट रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट द प्राइवेट अफेयर्स and hence should be restricted to private domain. Then there is a France model, which is a model of hard secularism. So France had the history of church domination, and hence it curtailed the authority of church. The French government prohibited people from expressing their religious sentiments in the public sphere, and एक लेसाइट है का कॉन्सेप्ट है दैट स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स रिमेन्स सेपरेटेड फ्रॉम द स्फीयर ऑफ द रिलीजन, and it does not promote any religion, neither it discourages and provides the religious provided the religious practices and belief of any community are not interfering with the state or any other citizen's right. And due to its commitment to the total separation, explicit religious practices and symbols are banned in the public sphere. Like आप पब्लिक ऑफिस में, पब्लिक प्लेस में, पब्लिक स्कूल में कोई ऐसा रिलीजियस सिम्बल्स वगैरह सब नहीं शो कर सकते हैं। एंड देन देयर इज इंडियन मॉडल। तो एक क्वेश्चन भी था जो है यूपीएससी में आ चुका है दैट हाउ इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट। तो जो इंडियन मॉडल है, सिंस इंडिया इज़ अ रिलीजियस डाइवर्स नेशन, it's in India the secularism, although inspired by the Western origin, it is rooted in India's socio-economic circumstances. Example, freedom struggle which advocated the equal respect of all religion. इंडिया में तो जो पॉलिटिक्स एंड रिलीजन है दे आर एट द प्रिंसिपल डिस्टेंस, बट द वॉल ऑफ सेपरेशन इज पोरस। एंड जो है पॉलिटिक्स कैन इंटरफियर इन टू रिलीजन टू गिव इफेक्ट टू प्रोग्रेसिव वॉइसेस within the religion and to show the disagreement with certain aspect of religion like abolition of untouchability, abolition of triple talaq, etc. But religion cannot interfere directly into the politics, and this is the concept given by the Rajiv Bhargav, that is state tries to balance different but equally important values. And however the religion is strictly prohibited to intervene in the state matter, and that is one can not mobilize electoral support on the basis of religion. तो ये सारे चीज़ें होंगी। देन देर इज द प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन। द कंसेप्ट इमर्ज फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ यूरोपियन सोसाइटीज एज दे वर एंटागोनाइज्ड विद द चर्च डोमिनेशन एंड वांटेड टू कर्टेल द अथॉरिटी ऑफ चर्च। तो डोमेस्टिकेटेड रिलीजन का जो कंसेप्ट है उसकी वजह से ये स्टार्ट हुआ था। and it has three manifestation like differentiation, privatization and decline in the social significance of religion. तो एक differentiation, तो
The religion will no longer will all encompassing, and its presence will be restricted only to the cultural domain. Then privatization, since the religion is a matter of faith, it will be confined only to the domestic spaces, and then the presence of religion in the public places will be prohibited, and hence its social significance will decline. इन कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें शिरूर मठ केस है 1954 का, वेयर रिलीजन that comprise the practice mode of worship and rituals, and when judiciary decides which practice is essential, it is called as judicio-popism. And फिर शिरूर मठ केस के अलावा देर इज़ शायरा बानो केस, जिसमें तलाक़ बिद्दत से रिलेटेड इशू था. फिर इस्माइल फारूक केस विद रिस्पेक्ट टू ऑफरिंग प्रेयर्स इन द मॉस्क. एंड आनंद मार्गी केस है, जिसमें तांडव डांस इज़ नॉट एसेंशियल प्रैक्टिसेस इन दी मार्गी फेथ, ये बोला गया था. एंड आज़म केस चर्च ऑफ गॉड केस है, दैट सिंग अजान केस, जिसमें सिंग अजान इज़ एसेंशियल बट नॉट ऑन लाउड स्पीकर पे बोलना इज़ नॉट एसेंशियल. So these are some case laws related to the doctrine of essential religious practices. Then the issue of uniform civil code. So it refers to the body of laws governing the matters related to the property and personal matters like marriage, divorce, adoption, inheritance, etc. And under Article 44, it guarantees that the state shall endeavor to seek the uniform civil code for all its citizens within the territory of India. तो ये DPSP में ये incorporated है. And the uniform civil code should be applied or not. So there is arguments in favor and against. तो argument for the motion क्या है? It will lead to the women empowerment, because different religions में there are different practices against the women. And uniformity in the personal law आएगा, reduce होगा the legal burden. It prevent it to be used as a political tool to serve the vested interest of the politicians. It helps in ensuring the national integration, social cohesion, etc. and help in realizing the true secularism. लेकिन जो लोग इसके अगेंस्ट में आर्गूमेंट देते हैं, देयर इज़ अ आर्गूमेंट दैट इट गोज अगेंस्ट द सलात बाउल थ्योरी ऑफ द multiculturalism of India. And in the absence of any blueprint, there is an apprehension among the minorities that it is imposition of the majoritarian culture on them. There is a lack of political will due to the complexity and sensitivity of the issue, and it is an over-exaggerated assumption that it will ensure the women empowerment, since change in the law in favor of women, like Hindu Inheritance Act, has neither brought any change in their property ownership nor in their social status in the society. So, in conclusion, we can say that the democracies can be established in this country, in those countries which are multicultural, and however efforts should be made to end the cultural exclusion, development and development of complementary identities, and promotion of unity in the diversity. तो unity in diversity का promotion करना चाहिए, rather than imposition of strict without consensus imposition of uniform civil code. And national cohesion does not require imposition of common identity. Instead, accommodation of diversity should be there, and hence any decision with respect to Article 44 should be on the basis of popular consensus. एक क्वेश्चन है रिलेटेड दैट डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड. So we can mention the Shah Bano case, Shah Bano and Daniel Latifi case, where it is due to for the maintenance of divorced women. In Shah Bano case, Supreme Court judgment gives judgment in favor of Shah Bano, quoting that Section 125 of CRPC, Muslim Women Protection Act was brought to overturn this. शाह बानो जजमेंट को ओवरटर्न करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉ लाया था ड्यूरिंग दी राजीव गांधी गवर्नमेंट. एंड अ फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट will be decided and given within the iddat period, that is initially 90 days, and it is considered as not fair, and hence in Daniel Latifi case, which was the lawyer of the Shah Bano, it was made clear that Shah Bano judgment is still valid. फिर एक शायरा बानो केस है. शायरा बानो केस रेज 3 issues, like issue of तलाक़ बिद्दत, that is instantaneous तलाक,
एंड एक होता है तलाक़ सुन्नत जो कि 3 मंथ के बाद होता है, ये तलाक़ बिद्दत ट्रिपल तलाक़ होता है, इंस्टेंटेनियस तलाक़ होता है। फिर निकाह हलाला केस एंड पॉलीगैमी प्रैक्टिस, बट द जजमेंट ओनली केम विथ रिस्पेक्ट टू द इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक़ विच सेड दैट तलाक़ बिद्दत इज नल एंड वॉइड, and after this government came with the triple talaq act which has provisions as talaq biddat is declared null and void. उसके अलावा क्रिमिनल ऑफेंस माना गया इसको विद 3 years ऑफ जेल एंड टर्म्स एंड फाइन, एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया फॉर वुमेन हरसेल्फ और रिलेटिव फाइल कंप्लेन अगर किया कोई तो। प्रोविज़न ऑफ रिकन्सिलिएशन विथ निकाह हलाला इफ़ पार्टीज स्टॉप लीगल प्रोसीडिंग, and provision of subsistence allowance and custody of child, and there is a magistrate can grant bail for hearing after hearing the wife. तो ये सारी चीज़ें थी. What are the arguments for and against this step? तो in the for there is a this act as it acts as a means of ensuring the stringent law to curb the arbitrary practices. It will ensure the gender justice like higher dignity and empowerment and fundamental rights of women. It provides redressal to women via the maintenance and custody, and since it is not an essential religious practice within the Islam, so state has freedom to interfere in this, and it is cognizable and non-bailable and strict deterrence कराएगा इसकी वजह से ये. But what are the arguments against this act? तो criminalization of a civil offense किया जा रहा है which is wrong. Provision of subsistence allowance is arbitrary as person is in jail. It will further aggravate the case of divorce and abandonment. In fact, it should be nikah halala which need to be criminalized as it threatens the dignity of women and violation of human rights, and selective criminalization हो रहा है इस केस में इस एक्ट की वजह से. तो these are the points in against. Then we'll come to the issue of संथारा. तो ये एक निखिल सोनी वर्सेस अदर्स केस था राजस्थान हाई कोर्ट का. इसमें संथारा इज डिक्लेयर्ड बैंड. संथारा जो है इज़ अ जस्ट लाइक अ सुसाइड एंड इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सेशन. सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मतलब हाई कोर्ट ने बोला था कि इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड दी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस विद इन द जैनिज्म. जैनिज्म में होता है कि फास्ट एंड टू डेथ करते हैं संथारा. एंड देन दिस जजमेंट इज चैलेंज द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट upheld that it is not wrong. And Santhara refers to the Jain practices to facing death voluntarily at the end of one's life. The practice was challenged on two grounds: that the right to life does not include right to die, and hence not provided under the Article 21. And also it does not constitute the essential legislative practices, and hence not protected under the Article 25. However, the judgment was challenged in the Supreme Court, and the ban on Santhara was lifted based on the following argument: that High Court ने बोला कि judgment is based on the incorrect observation of Jainism. They have criminalized the philosophy of Jainism, and hence they do not have right to determine which practice is essential and which are not. And equality and जो है जो संथारा है with suicide is not logical, as equating संथारा as suicide is not logical, as संथारा is not impulsive and is an act of spiritual purification. And John scholars were not consulted by the High Court during this judgment. Then the last is सबरीमाला इशू. तो जजमेंट ऑफ 4 जज आया था दैट सबरीमाला में जो टेम्पल है वहाँ पे नहीं अलाउ किया जाता है विमेन को. तो इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ जो है इम्प्लीमेंटिंग पैट्रियार्की एंड गोस अगेंस्ट द आर्टिकल 14, 15, 19, 21 एंड 25. Considering the female impure during the menstruation is also violated under Article 17, that is untouchability. The view of Justice Indu Malhotra में था कि this is not the act of this is act of Judeo-Popism, and God also has right to privacy, that is celibacy, and you cannot expand ambit of Article 17 to include gender also. To counter it, the rest of the judges gave that doctrine of living tree of the Constitution, and majority of judgment was lifting the ban of entry of the women in the temple. Argument against क्या था कि that women should be allowed in the allowed entry in the temple, that different temples have different customs, मतलब should not be allowed. So different temples have different customs, and hence the Sabrimala there is no discrimination, just some restriction, and practice of barring women in menstrual age group
to enter the practice premise of the temple is an essential religious practices and hence promoted under the Article 25. Right to privacy of the god needs to be respected. It is not responsible possible for female to put up the physical hardship and other conditions like women males. तो काउंटर आर्गुमेंट था कि बैन ऑन द एंट्री ऑफ वीमेन इज बेस्ड ऑन द पैट्रियार्कल बिलीफ एंड वीमेन्स राइट ऑफ वर्शिप इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लॉज and it challenges the right of women under the article 14, 15, 19, 21, 25. The approach of excluding women in menstruating age is similar to the practice of untouchability, which is forbidden under the article 17. The court also held that to celebrate that the celibate nature of the Lord Ayyappa by the fact itself does not justify the exclusion of women, and court also gave concept of living tree doctrine where the constitution has the updated to keep up with the changing time. So this is all अंडर द टॉपिक ऑफ सेकुलरिज्म एंड इसके साथ हमारा इंडियन सोसाइटी का भी जो सब्जेक्ट है ये कंप्लीट हुआ. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों में पीर ग्रुप में शेयर करें, कमेंट करें कमेंट सेक्शन में आपके जो भी फीडबैक हैं, और सब्सक्राइब करके रखें इस चैनल को ऐसी ही वीडियोज़ के लिए. कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.